कि जय यीशु यीशु साय फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपको एडवेंटिस्ट ब्लॉग लाइव में। चलिए फिर से डेली की तरह आज भी आ गया हूँ आप सभी के बीच में। अगर चैनल में नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जी हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्या है कि जो कुछ भी वीडियो में बनाता हूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आपको सपोर्ट मिले। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ परमेश्वर के काम में। ये तो मेरी शुरुआत है और मैं परमेश्वर का वचन को मैं पढ़ता हूँ डेली, इसलिए आप सभी के बीच में आया हूँ। आप लोग मेरा साथ दीजिए और लाइव जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि मैं आप सभी के बीच में मैं बाइबल पढ़ सकूँ और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकूँ। परमेश्वर महान है, जो हम सबको बनाया है उसने सृष्टि किया है और अपने अपने महान हाथों से हम लोगों को रचा है। इसलिए हमें परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो देखभाल करता है और मुसीबत से बचा करता है। इसलिए चलिए फिर से मैं सभी को स्वागत करता हूँ मेरा एडवेंटिस्ट ब्लॉग्स लाइव में। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करूँगा आप सबके बीच में, आप लोग बने रहिएगा। ठीक है। हे महास्वर्गीय पिता, जीवित परमेश्वर, हमारे पिता बेटा रात भर सुरक्षित रखें, उनके श्वास पिता परमेश्वर आने वाला संकट पर प्रचार का संसार मदद केवल हमारे पिता परमेश्वर हमें बेटा दिन भर सुरक्षित रखें, मेरे संकट की सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। जो कुछ पढ़े के बाइबल से अपने मर्द में जीवन में इस्तेमाल कर सके पिता, हमारे मन में जितना बुरे सोच दूर करने पिता परमेश्वर, हमारे आशीष तेरे मदद करना, मुझे विश्वास रखना पिता। हर सबसे बड़ी वचन पापी गुनहगार होने के नाते मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ परमेश्वर, पापों को क्षमा करना। आगे हम इस पर सब कुछ जानता है, हमारे चलिए प्रभु आपकी इच्छा प्रभाव में परिवार का आपके आत्मा सुनते हैं। ये छोटी प्रभु यही समझता हूँ, दायक समझ सुन और कर रहा हूँ। आप लोग बने रहिएगा, मैं तो ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊँगा। परमेश्वर सभी का आशीष दे। जैसे कि मैंने द होली बाइबल इंग्लिश भाषा में, तो मैंने चैप्टर जॉन चैप्टर 5 को मैंने पढ़ रहा था, शायद 5 कंप्लीट कर लिया, 6 को पढ़ रहा हूँ। ओके, I have already completed chapter 5, so John chapter 5, so I have to complete chapter 6. Okay, chapter 5 already completed, chapter 6. But if you do not believe his writing, how will you believe my words? Yeah. 47 को पढ़ा, जॉन चैप्टर 5 को पढ़ना पड़ता है लास्ट में। तो चलिए, फीडिंग द 5,000 फीडिंग द 5,000 आदमी को फीड के मतलब खिलाया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आफ्टर दिस थिंग्स जीसस वेंट ओवर द सी of Galilee, which is the sea of Tiberias, where a great multitude followed him, because they saw his sign which he performed on those who were diseased. And Jesus went up on the mountains, and there he sat with his disciples. Now the Passover, a fast of the Jews, was near. Then Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitude coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread that these may eat?" But Jesus, he said, to test him, for he himself knew
what he would do. The flips answer him, 2,000 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. Okay. On the on of his disciple Andrew, Simon Peter's brother, to said to him, there is a lad here who has five uh, barley loaves and two small fish, but what are they among so many? Then Jesus said, make the people sit down now. There was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted. So when they were filled, he said to his disciples, gather up the fragments that remain so that nothing is lost. Therefore they gathered them up and filled 12 baskets with the fragments of the five barley loaves, which were left over by those who had eaten. Okay. Amen. Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, this is true that prophet who is to come into the world. The Jesus walked on the sea. Therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed against to the mountain by himself alone. Now when evening come, his disciple went down to the sea, got into the boat, and went over the sea toward Capernaum, and it was already dark, and Jesus had not come to them. Okay. Then the sea across because a great wind was blowing. So when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and drew near the boats when they were afraid. But he said to them, it is I, do not be afraid. When they willingly received him into the boat, and immediately the boat was at the land where they were going. This, the chapter 6 also so long, 71 verses is content. Let's see how much I can study, okay? The bread from heavens. On the following day, when the peoples who were standing on the other side of the sea saw that there was no other boat where except that one which his disciple had entered, and that Jesus had not entered the boat with his disciple, but his disciple had gone away alone. Whoever others boat come from Tiberias near the place where they ate bread after the Lord had given thanks. When the peoples therefore saw that Jesus was not there, nor his disciple, they also got into boat and come to Capernaum, seeking Jesus. And when they found him on the boat side of the sea, they said to him, Rabbi, where did you come here? Jesus answered them and said, most surely I said to you, you seek me not because you saw the sign, but because you ate all of the loaf and were filled. Do not labor for the do not labor for the food
which perished, but for the food which endure to everlasting life, which the Son of Man will give you. Because God the Father has set his seal on him. Then they said to him, what shall we do that we may work the works of God? Okay. Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in him whom he sent. Therefore they said to him, what sign will you perform when that we may see it and believe you? What work will you do? Our father ate the manna in the desert, and as it is written, he gave the bread from heaven to eat. Then Jesus said to them, most surely I said to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gave you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. When they said to him, Lord, give us this bread always. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Man, but I said to you that you have seen me and yet do not believe. At all that the Father gave me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. Amen. This is the will of the Father who sent me, that of all he has given me, I should lose nothing, but should rise rise it up at the last day. And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believe in him may have everlasting life, and I will rise him up at the last day. Okay, thank you. So I have completed John's chapter 6, 1 to 40. It is contained so long, 71 verses. So I have I will study more afterward. मैं कंप्लीट किया चैप्टर 6 को 1 से लेकर 40 तक. बहुत लंबा होने के कारण मैं बाद में पढ़ूंगा. Thank you for being with me. Listen to Bible words. परमेश्वर सबको आशीष दे. God bless you, all of you. और भला चंगा श्वास रखें. Because he is great and he is everlasting God. और महान है, इसलिए परमेश्वर सबको आशीष देता है. हम लोग को धन्यवादित होना है, कहे कि महान स्वर्गीय पिता हमारे साथ होता है, मदद करता है, वचन का श्वास रखता है. और मेन बात है, हम लोग को बनाया है, संसार में भेजा है, तो हम लोग का अपना आपको गाइड करके रखना है और हमको जानना है कि क्या सही है क्या गलत है. ठीक है, तो फिर से चलिए, फिर से मैं अंत करने से पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करता हूँ. सब बने रहिएगा. हे महान स्वर्गीय पिता, जीवित परमेश्वर, अपने वायदे का अपने बराबर चित्र है, मतलब स्वास्थ्य रखे पिता परमेश्वर. अपने स्वर्गदूत भेजकर रक्षा रखा, बुरे स्वर्ग बचा रखा, बुरे सपनों से बचा रखा, मीठी नींद दिया, सुंदर दिन देखने का मौका देता है. दिन का शुरुआत में अपनी सहायता मदद करना पिता परमेश्वर. आशीष देना, मदद करना, वचन का स्वास्थ्य रखना, अपने स्वर्गदूत भेजकर रक्षा रखा पिता परमेश्वर. बुरे सोच बचाए रखना, बुरे सोच बचा से बचाए रखना, आने वाले संकट से बचाए रखना पिता परमेश्वर. इस प्रकार आत्मा सुरक्षित रख, दिन भर सुरक्षित रख, मदद कर, आने वाले संकट से बचा रहे. जो कुछ पढ़े बाइबल से अपने मर्यादा जीवन में इस्तेमाल कर सकते पिता परमेश्वर. आस पड़ोस के जितने लोग हैं सभी के संग साथ हो, जहाँ कोई रिश्तेदार सभी के संग साथ होता है पिता.
चर्च के प्रत्येक वर्ष संग साथ हो आशीष दे मदद कर, जो दुख तकलीफ दूर में से गुजर रहे हो तो संग साथ में मदद करना, दावों का आशीष देना, खाकर वाला संग श्वास हो के आपको धन्यवाद दे सकते पिता परमेश्वर। हर परिवार संग साथ हो मदद कर, माता जी के संग साथ हो, दोनों बहनों के संग साथ हो आशीष दे मदद कर, वचन का श्वास रख पिता परमेश्वर। इसका प्रार्थना करने वाले संग साथ हो, जो भी बाहर है पिता उसे सहायता मदद करना, आशीष देना, उसका हर घाटी का मुकाबला पूरा करना पिता परमेश्वर। क्या है कि आपने सृष्टि किया है पिता, अपने नाजुक हाथों से, अपने महान हाथों से हमें बनाया पिता, बोल के नहीं परंतु अपने अपने हाथों से बनाए है पिता परमेश्वर। इसलिए हमारे शरीर में, उसका शरीर में अब जानते हैं पिता किस चीज़ की कमी घाटी है पिता, उस चीज़ को अभी पूरा करना पिता। क्या है कि हम लोग नहीं जानते हैं किस कड़ी किस क्षण हम लोग पाप में अपराध किए बैठते हैं पिता परमेश्वर, और हम लोग के शरीर का कुछ भी क्या नहीं है जो हम लोग कह सकते हैं। फिर पिता परमेश्वर हम लोग नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपका वचन आपके अनुसार हम लोग के गाइडलाइन से पिता परमेश्वर हम लोग चलने की कोशिश करना पिता परमेश्वर। हमारे संग साथ में सहायता मदद का बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर। बुद्धि ज्ञान की कमी घटी है पिता, हम लोग ताकि आपके रास्ते में चल सके पिता। जितने को भी लाए हैं पिता, हम लोग मेरे साथ में पिता, सभी के संग साथ में, परिवार के संग साथ में मदद करना पिता। हर सब विचार बलि वचन चरण पापी गुनाहगार है पिता, सब आप अपना को क्षमा करेंगे। इस वजह से आप खुद जानते हैं हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा से प्रभु, अपने आप को, अपने परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। चटन प्रभु यीशु मसीह नाम से तुम दायित्व सुनो करो या फिर समय पाविता जाए आज भी प्रभु, हमारे दिन भर को रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया आपके अपने को क्षमा कर परीक्षा में लेना परंतु बड़े समझा, क्योंकि राजा प्रकार महिमा सदा की है। तो थैंक यू मेरे साथ होने के लिए। बहुत समय हो गया, सबको बाय, फिर से मिलेंगे बाद में।